Hi guys, Namaste. Welcome back to Ankanish Creations. So today's video is going to be super special. I am going to be painting a dot mandal on the biggest canvas I have ever painted dot mandal painting ever till now. So this is the canvas. I am just having fun with the canvas क्योंकि इतना बड़ा था तो डर लग रहा था मुझे कहाँ से शुरू करूँ कैसे शुरू करूँ but finally let's start. Today is the day where we are going to start. It took me so many days to finish this canvas. But yeah, I am recording this narration. The painting has been completed, so I'm so excited to share the whole process with you all. So first thing which I did was to apply a layer of gesso all over the canvas, and when the gesso has dried completely, I took a measuring tape जो carpenters use करते हैं ना या कोई भी furniture बनाने वाले to measure the center of the canvas क्योंकि इतनी बड़ी scale नहीं थी मेरे पास, so I used this tape to measure the center and then मैंने वो thread वाली टेक्निक यूज़ करी बीच में सर्कल ड्रॉ करने के लिए 40 सेंटीमीटर का, बट वो वर्क नहीं किया तो यहाँ पे मैं फिर रूलर लेके 20 सेंटीमीटर पे सेंटर से छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ एंड देन आई कनेक्टेड दोज लाइन विथ फ्री हैंड टू फॉर्म अ सर्कल. So that's how I made a 40 centimeter circle inside this 90 centimeter big round canvas. After that, I quickly brushed off all the eraser dust and then I started painting black acrylic paint on the outer circle of this canvas. On this black acrylic paint, I will be doing dot mandal design, and on the inner circle, I'm going to paint a lighthouse. I'm going to do 2 layers of this black paint, letting the first layer dry completely, and this is how it looks. Then I also drew this lighthouse which I'm going to paint in the center. And yeah, now we'll start. I'm again brushing off all the eraser dust before starting to paint, and then I'm starting to paint my lighthouse design in my own fantasy landscape kind of style. So I have not been able to record like each and every step of this painting while making it because it took me so many days to finish this painting. और मैं कभी दिन में पेंट कर रही थी, कभी रात में पेंट कर रही थी, कभी कभी मैं भूल ही जाती थी कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है क्योंकि मैं कोई ना कोई पॉडकास्ट या कुछ मूवी चला देती थी वाइल पेंटिंग क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ना और इतना सारा रिकॉर्ड करना पॉसिबल भी नहीं होता. तो आई हैव रिकॉर्डेड बिट्स एंड पीसेस एंड इट्स अ नाइस रिकॉर्डिंग विच आई हैव बीन एबल टू रिकॉर्ड, मतलब अच्छे से दिख जाएगी पेंटिंग इन प्रोग्रेस. सो हियर आई एम पेंटिंग द लाइट हाउस पार्ट फर्स्ट, पेंटिंग द स्काई हियर. I'm not focusing on like gradient too much. I'm kind of letting it to be very raw and उसके ऊपर मैं अपने designs paint करूँगी which is like fantasy landscape के design, कुछ भी एकदम realistic type के design नहीं होते. This lighthouse is inspired from Pullbeg Lighthouse in Dublin which is my favorite lighthouse. मुझे बहुत पसंद है वो जगह, मेरी favorite जगह है आयरलैंड में, डबलिन में. So yeah, this is inspired from that lighthouse, and as you can see now I have moved on to the waves. So yeah, I'll let you enjoy this process of painting the lighthouse in a fantasy landscape style. So this is how my fantasy landscape of lighthouse looks like at the end. It looks so beautiful, and इसको paint करने के बाद I corrected the edges, उनको थोड़ा finish look दिया with another layer of black paint. अब as you can see here थोड़ा थोड़ा paint बाहर आ गया था from the lighthouse painting, so I finished up that यूजिंग ब्लैक एक्रिलिक पेंट. और जो बाकी बाहर का एरिया था ब्लैक पेंट वाला वो भी ओपेक नहीं दिख रहा था, तो आई पेंटेड अनदर लेयर टू मेक इट look more opaque, and then I started with my dot mandal painting the next day, but then I forgot to record it and then the other day when I started with the continued with the dot mandal painting, I thought I realized that I have to record the process as well.
So मैंने बीच बीच में बहुत सारी बार ऐसे मिस किया है इस प्रोसेस को रिकॉर्ड करना, but that's okay. The motive here is not to show you each and every step because you anyway cannot follow each and every step in this kind of painting which is so huge. You have to just get inspired from it and create your own design because it is so hard to follow this kind of design as it is. Even I will not be able to make this same dot mandal design again if somebody asks me to do so, and I'll say no if anybody asks also. So yeah, and it is so hard to decide the color shades when we are making such big scale dot mandal painting. It is so hard to decide the color combination and all of that stuff. It takes so much time to decide the color combination as well, but at the end everything looks good with this kind of painting. This is the progress till now. अभी तक सिर्फ इतना सा पार्ट हुआ है और इतना सारा पार्ट बाकी है. एंड ऑल्सो विद डॉट मंडल पेंटिंग ना हम खड़े रह के ईजल पे कैनवस को रख के नहीं कर सकते बिकॉज द डॉट्स विल ड्रिप. तो झुक झुक के करने में ना बैक में जो पेन होता है, स्पेशली शोल्डर साइड में, बैक में, अपर बैक में, बट ठीक है, इट gives me peace. I feel so happy making it, so I enjoy making this kind of paintings. Update time. यहाँ तक पहुँचे हैं हम कल रात तक. अभी तो बहुत सारा बाकी है, बट सुंदर लग रहा है ना. ये अब आगे का काम शुरू करते हैं. So now I am on my third day of painting the dot mandal design on this canvas. The lighthouse part are on different days. The dot mandal design is on different days. So this is the third day of dot mandal design. So I always start off any new day by brushing off the canvas so that if there is any dust on the canvas, वो हटा कर ही I start painting. So yeah, as you can see here, I am finishing this gradient design with a red acrylic paint. इतने बड़े कैनवस पे जो मैंने पेंट करते हुए रियलाइज़ किया है ना, आई डू फ्री हैंड डॉट मंडल आर्ट, बट पेंटिंग a freehand dot mandal design on such a big canvas, it is little bit difficult and trickier than painting on a small canvas. तो मैंने इस वाले में थोड़े measurements का use किया है. Like as you can see here, I'm using a pencil to mark where I want to start this swoosh kind of design, like drag करके जो बनाते हैं. I am marking with a pencil. वरना छोटे canvas पे तो I don't mark anything. I just do it as I go on. But here I have done some marking, but it is still a freehand dot mandal design here as well. So after doing the orange design, I did some more design and that day, and now this is the next day when I'm picking the canvas again to continue this painting. And as I said earlier, I always brush off any dust before starting on the canvas. क्योंकि रात भर और काफ़ी मॉर्निंग का टाइम कैनवस ऐसे पड़ा था, तो इट्स पॉसिबल कि थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है कैनवस पे. सो आई ऑलवेज स्टार्ट ऑफ बाय ब्रशिंग ऑफ एनी डस्ट बिफोर स्टार्टिंग द पेंटिंग प्रोसेस ऑन इट. एंड कभी कभी ना हमें जो डिज़ाइन लगता है कि इट विल लुक गुड, आफ्टर पेंटिंग इट डज नॉट लुक गुड. लाइक हियर दिस ब्लू कलर swoosh or whatever it is called design, it did not look nice to me. So I removed all of the blue paint with a clean brush, washing the brush in between several times. Then using a earbud, I soaked up all the water and the paint which was there. Luckily पहले का सारा जो भी green और orange, green I think fresh था, but orange वाला पहले वाले दिन किया था, तो it was dried. Now I'm using the same base black color to cover the जो भी मैंने अभी उस पर रिमूव किया ब्लू कलर वाला पार्ट, उसको कवर करने के लिए. एंड देन आई यूज द सेम शेड ऑफ ब्लू टू डू द रनिंग डॉट डिज़ाइन, एंड आई थिंक इट लुक गुड विद द रनिंग डॉट. एंड I mean this
outcome is looking good to me than the swoosh part. I don't know it is called swoosh या क्या बोलते हैं, I'm not sure. बट उस वो वाले डिज़ाइन पे अभी तक मेरा हाथ उतने अच्छे से बैठा नहीं है. आई मीन लाइक स्पेशली जो बड़े एरियाज होते हैं उसमें मुझे थोड़ा सा डर लगता है. लेकिन कोई टाइम पे लाइक इन दिस कलर इट केम आउट सो नाइस. मे बी कलर की कंसिस्टेंसी पे भी डिपेंड करता है कि कैसा आउटकम आएगा. बट या इट्स अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस. डे आई डोंट नो व्हाट, आई थिंक 9th डे होगा ये पेंटिंग करने का. आई एम टारगेटिंग आज तो ये फिनिश करनी है कैसे भी, कुछ भी हो जाए. अभी तक ऐसी दिख रही है एंड आई एम सो हैप्पी द वे इट्स लुकिंग. अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि ऐसे ही मतलब डिटेल्ड पैटर्न्स यहाँ करूँ या फिर मतलब ऐसे कुछ स्प्रेडेड सर्कल्स करके और उनके अराउंड कुछ डिज़ाइन करूँ. आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, बट इट्स गोइंग टू कंप्लीट टुडे होपफुली. नो, आई विल फिनिश इट टुडे. यस, आई कैन डू इट. कम ऑन, लेट्स गो. So like I always do, I'll start off by brushing the dust क्योंकि कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत होता ही है. So it's better to brush off the dust before starting. So here I have used small mirrors to mark my big dots ताकि सारे big pink dots के बीच में almost even distance रहे. And I'm using neon pink color to make these big dots because I wanted those dots to highlight very nicely. और फिर उसके around I'm making kind of a leaf kind of design is my motive to make dot mandal. बनाते एक बड़ी सी लीफ टाइप की डिज़ाइन हो या पेटल टाइप की डिज़ाइन हो. So yeah, enjoy this process. We are getting closer to the finishing of this big dot mandal painting. लेकिन जैसे मैंने बोला था कि आज तो करनी ही है कैसे भी करके, हुई नहीं थी, एक और दिन लगा था. तो ऐसे होता नहीं है बहुत बार. तो ये जो येलो डिज़ाइन मैं कर रही हूँ उसके बाद मैंने उस दिन फिनिश कर दिया था. नेक्स्ट डे आई डिड दिस 3 डिज़ाइंस ऑन ईच साइड, बट मुझे वो अच्छे नहीं लगे. सो आई wiped them off. Then I painted the black color again, and instead of that I decided I will do the golden border to give this painting a finished look. बहुत कंफ्यूजन होता है जब इतने बड़े कैनवस पे डॉट मंडल करते हैं. एंड आई डिडंट वांटेड टू कवर दिस पार्ट कंप्लीटली लाइक आई हैव कवर्ड इसके पहले वाला पार्ट. तो कंफ्यूजन हो रहा था. बट देन द गोल्डन बॉर्डर गेव इट अ फिनिश्ड लुक. एंड जो मुझे थोड़ा सा खाली पार्ट भी रखना था वो भी हो गया. So yeah, overall it looked nice. And this is the final part. I decided to give it more brightness by adding silver paint on top of neon pink. And then now we are signing the artwork, which means it's finished and it feels so good. बहुत मज़ा आई. मैंने सबसे पहले अपने भाई बहनों को इसका पिक्चर भेजा और फिर उसके बाद अच्छे से फ़ोटो लेके सोशल मीडिया पे डाला. and everybody loved it. I'm so happy. This is how it looks at the end. Let me know your thoughts in the comment section below. I'm so excited to read all your comments. It was so time taking, बहुत hard work करना पड़ा, but at the end it looks so good. I'm so happy. So yeah, I'll see you soon. Bye. Love being creative.